किसी के पास अगर नहीं आई है तो चलें. So बच्चों, we are going to start the next thing where we end equilibria. We need to move forward. Now we are moving towards something new, which is equilibrium law, right? Which is equilibrium law, right? What is the law? The law says that the concentrations of product over the concentration of reactants will give you the constant value, which is known as equilibrium constant, right? So for suppose if you have a reaction like this, that a species A is reacting with the species B and forming what? It is forming C and D, right? For suppose we have this one, the equation over here, and number of moles of A would be X, the number of moles of B would be Y, the number of moles of C would be, for suppose, Z, and the number of moles of D would be W, for suppose. Now, so if you are going to talk about the constant for this, if you talk about the constant for this, so what you need to keep remember that all the time you need to write product first and then over reactants, right? And you need to use these brackets, square brackets. You need to use square brackets over here. There is a meaning of a square bracket, and the meaning of a square brackets is actually concentration. The meaning of this is actually concentration. So you can't use any other bracket. You just need to use a square bracket all the time. So this is what this is saying. This expression is saying that the concentration of products over the concentration of reactant. And also you need to keep remember the stoichiometric numbers. ये stoichiometric number जो आप moles होते हैं equation में उसकी बात कर रहा हूँ. So stoichiometric number of C is actually Z, so it would be the power of the concentration of C, and the stoichiometric number of D would be W, which is the power of the concentration of D. Same as it is if you talk about A, so it would be X. If you talk about B, so it would be Y. You need to keep remember that the concentration of product with raised to the power of their coefficients over the concentration of reactant with raised to the power of their coefficients would be the constant, and it is known as Kc. This is equilibrium constant. This is what? Equilibrium constant. Right, bacho? Is that right? This is the constant that you need to know. This is equilibrium constant. Right, bacho? So can you hear me? Yes, sir. ठीक है, तो बेटा जवाब दोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि कोई सामने बैठा हुआ है. ठीक है. Now, for suppose if we have example number one, we have for suppose like this. Just look at over here. This is the equation again. 3H2 reacting with 1 nitrogen molecule producing 2 ammonia molecule. For suppose, but if I ask you to write the equation for this, so how can you write the equation, or you can say that the expression for Kc? So it would be like this, that over you need to write products. So the concentration of ammonia gas with raised to the power of this coefficient, which is 2 right now, over the concentration of hydrogen gas and the nitrogen gas with raised to the power of their coefficients. So you can write the equations, or you can write the expression by the equations like this. Right, bacho? Got the point? Yes, every one of you. Is that clear to every one of you? Yes, sir. चलें, जल्दी से मुझे करके दिखाएं. अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मुझे 2 से 3 इक्वेशन करके दिखानी है, so can you write the expression for these equations? Just write down the expressions for these equations quickly. For suppose you have this equation, what would be the expression for this? And for suppose you have CH3 COOH reacting with CH3 CH2OH would give you CH3 COOC2H5 along with water molecule, right? And also if you have H2 plus I2 gives you 2HI. If we have these 3 equations, bacho,
So can you write the expression for these three equations quickly? Just write down the expression of Kc for these three equations. Just do it quick. Just writing, I'm solving this on the screen, तो आप देख सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं. Hopefully आप सबने सही किया होगा, और it would be asked in exam for 1 mark, right? So you need to keep prepare for this for getting 1 mark. So it is a concentration of product with raised to the power of their coefficient over the concentration of reactants with raised to their powers, right, of their coefficients, right? And if you talk about this one, so we don't have the powers of these reactants and products, we just need to write them in this way. Ester plus water over ethanoic acid concentration and ethanol concentration. Right, this would be like this. And if you talk about the last one, so it would be the concentration of Hi with raised to the power 2 and over the concentration of hydrogen and iodine. But so you need to keep remember over here, we don't need to write the concentration of solids. In this equation, this iodine is actually gaseous. That is why we are using to write it in this expression. Otherwise, we are not going to write the solids in these equations, right? You need to keep them out. Solids are not part of equilibrium expressions, right? And if you want to know the reason about this, so you need to keep remember that the concentration of solids are always constant, right? So keep remember this, that solids are not the part of equilibrium concentrate or equilibrium expressions or Kc expressions, right? Because the concentrations of solids are always fixed. They are always fixed, constant. That is why we cannot talk about that. चलें आगे चलते हैं. उसके बाद अगर आप आगे की बात करें तो आप Kc की वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हो. You can even calculate the value of Kc if you have the concentrations of the following reactants and products, right? For suppose if we have a equation over here, which is this one, for suppose this one, and I'm giving you the concentrations of the following reactants and products. So you can even find out the value of Kc at any time, right? So for suppose if the concentration of SO2 is given to you, which is 0.016, and the concentration का unit आप लोग को पता है, it is always mole per decimeter cube, ठीक है ना? For suppose the concentration of oxygen is also given to you, which is 0.0083, and the concentration per unit is mole per decimeter cube, and the concentration of SO3 is also given to you, which is 0.15 mole per decimeter cube. If all the concentrations are given to you, so you can even find out the value of Kc over here. How can we find out? We know that. First of all, 1 mark for the expression, and it is always product with raised to the power of their coefficients over the reactants with raised to the power of their coefficients. ठीक है ना? We know this expression. We just need to put the values over there. हम क्या करेंगे भाई? SO3 की value put कर देंगे, which is 0.15 का square, और SO2 की value put कर देंगे 0.016 और उसका square, and oxygen की value put कर देंगे 0.0083. We need to solve this. आपके पास जब इसको solve करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा Kc का. क्या आंसर आएगा? Let's check. आपके पास कैलकुलेटर खोलना है हमने, और उसके अंदर we have 0.15 square over 0.016 square, and then into 0.0083. So it is somewhere 10.58. It is somewhere 10.58 10 raised to power 3. This is Kc. Now the scene is कि भाई इसका यूनिट भी होता है. अब इसका यूनिट कैसे निकालेंगे वो भी पता होना जरूरी है. इसका यूनिट कैसे निकालेंगे भाई? आपको इसका यूनिट निकालना है इस तरह. जस्ट लुक एट ओवर हियर. ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए. अब इस इक्वेशन को यूज करें आप, ठीक है ना? वी नो दैट ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे भी कॉन्सेंट्रेशन है. ऊपर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, नीचे आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है ना? जस्ट लुक एट ओवर हियर, हाउ मेनी यूनिट यू हैव upward in products. We have just two units over there ना. और नीचे की अगर आप बात करें तो कितने हैं? 2 + 1. It means you have 3 units of mole per decimeter cube in
the denominator, right? So we know that कि भाई 2 से 2 कट जाएंगे, आपके पास बचेगा क्या 1 over concentration, और concentration का यूनिट क्या होता है बच्चों, it is 1 over mole per decimeter cube हो गया ये, ठीक है ना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब ना। तो जब ये दोनों चीजें ऊपर जाएंगी तो व्हाट वुड बी द आंसर बच्चों, मोल आपके पास इनवर्स हो जाएगा और डेसीमीटर आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस वुड बी द यूनिट ऑफ दिस केसी। अब ये इस केसी का यूनिट है, आपके पास चेंज भी हो सकता है, अगर कोई और सी इक्वेशन होती तो आपके पास यूनिट ऑफ द केसी वुड बी चेंज, वो कुछ और हो सकता है, राइट बच्चों, इज दैट क्लियर? यस। चलें अब जरा जल्दी से मुझे फाइंड आउट करके दिखाइए यूनिट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है ना। फॉर सपोज यूनिट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस, यूनिट ऑफ केसी निकालना है आपने, ठीक है ना, एक्सप्रेशन निकाल के आप यूनिट ऑफ केसी निकाल सकते हैं। फॉर सपोज आपके पास अमोनिया की फॉर्मेशन वाली इक्वेशन है, सो व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ दिस इक्वेशन का जो केसी होगा उसका यूनिट क्या होगा। फॉर सपोज अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन है तो इसका यूनिट ऑफ केसी क्या होगा। फॉर सपोज अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन है तो इसका यूनिट ऑफ केसी क्या होगा, जल्दी से इसको निकाल लीजिए, इसका भी पेपर में वो 1 मार्क के लिए पूछता है। तो here you can see this बच्चों, if you talk about the units, तो आपने सिंपल ये करना है कि अगर आप यहाँ देखते हैं इस इक्वेशन को, so in the product side you just have 2, so ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, और नीचे अगर आप देखते हैं तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन 4, सही है। तो 2 से 2 कट जाएंगे, आपके पास 2 बचेंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव मोल स्क्वायर एंड डेसीमीटर 6, ठीक है ना। जब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो ये बन जाएगा मोल इनवर्स और डेसीमीटर बन जाएगा 6 पॉजिटिव। तो दिस विल बी द यूनिट फॉर द फर्स्ट वन। सेकंड वन की बात करें तो सेकंड वन में प्रोडक्ट ज्यादा है, सो इट वुड बी कंसंट्रेशन का स्क्वायर एंड दिस इज कंसंट्रेशन, सो 1 over 1, सो इसका यूनिट सेम होगा जो कि कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एंड इफ यू टॉक अबाउट थर्ड वन, सो this is also a square and this is also a square, so both would be cancel each other and would give you no unit, ठीक है। ये पेपर में भी आता है बच्चों, इस तरह का सवाल पेपर में भी आता है कि why it has no unit, so you just need to write over there because units cancel each other, right। 1 मार्क के लिए आपको no unit डिफाइन करना होगा, 1 मार्क के लिए आपको बताना होगा there would be no unit, and 1 मार्क के लिए क्या लिखोगे आप, रीजन because they cancelled each other, right बच्चों। सर जी बेटे। सर वो जो आपने अमोनिया का किया है 1 over मोल स्क्वायर डेसीमीटर -6, तो ये -9 नहीं होगा, क्योंकि -3 का अगर क्यूब होगा तो 9 हो जाएगा। स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। सॉरी स्क्वायर होगा तो -3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा ना। -3 का स्क्वायर क्यों होगा, when you have क्यूब और बाहर लिखा हुआ हो तो 2, तो it should be 3 to the 6 ना। नो सर 3 into 3 तो 6 9 हो जाएगा ना। ये पावर नहीं है, पावर नहीं है, स्क्वायर के हिसाब से 9 होता है। नहीं नहीं ये पावर नहीं है ना। देखो अगर आपके पास एक यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना, एक और आपके पास है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि ये डेसीमीटर क्यूब और ये डेसीमीटर क्यूब का मतलब हो गया ये डेसीमीटर 6 हो गया। आप उसको पावर क्यों दे रहे हो, पावर थोड़ी है वो। अगर आप इस तरह, यस सर अगर आप जो अमोनिया की बात अगर आप करते हो तो अगर 2 अमोनिया है आपके पास ना, तो एक अमोनिया का जो आपके पास वो है यूनिट, वो क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना। दूसरे वाले का भी क्या है आपके पास, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। इस तरह नीचे 4 होंगे आपके पास, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, जो 2 बचेंगे वो आपके पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। पावर ना लगाएं उसके ऊपर, आप पावर गलत लगा, सही है। ओके सर, ठीक है सर। चलें नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारी मेन, आप समझ लें ये मेन चीज होनी चाहिए हमारी क्लास की, और इसके लिए आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से इसको समझना है। इट्स द मेन थिंग। फॉर सपोज यू कैन इवन कैलकुलेट द केसी, दिस इज व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ केसी, कैलकुलेशन फॉर केसी, राइट। अब केसी की कैलकुलेशन करने के लिए वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। केसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 तरह की आपके पास टाइप्स हैं केसी कैलकुलेट करने की। एक टाइप ये होती है कि वो आपको रिएक्टेंट्स देता है ना, कॉन्सेंट्रेशन देता है, और इक्विलिब्रियम पे किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन दे देता है, तो आप जो है पूरा फॉर्मूला सॉल्व करके और आप जो है केसी की वैल्यू निकाल लेते हो। और एक टाइप ऐसी होती है जिसमें वो केसी की वैल्यू आपको दे देता है,
और दूसरे बाकी सारी चीजें आपने उसमें सॉल्व करनी होती हैं। पहले हम केसी की कैलकुलेशन करेंगे और दूसरे वाली टाइप फिर उसके बाद करेंगे जिसमें केसी की वैल्यू गिवन होती है और बाकी चीजें सॉल्व करनी होती है, ठीक है। सो यू कैन से दैट दिस इज टाइप नंबर 1, this is type number 1, and I need to start with this example that I have a question over here. For suppose you have A plus 2B and they are reacting together to give you C plus D, right? This is the equation for suppose we have, and you need to consider that that this is on equilibrium. The equation is right, and 1 mole of P is actually reacting with 1 mole of Q in 1 decimeter cube of water. For suppose 1 mole of A, 1 mole of A reacting with 1 mole of B, right? 1 mole of A reacting with 1 mole of B, right? And you can say that in 1 decimeter cube of water. वहां पर हमारे पास वॉल्यूम भी मौजूद है, ठीक है ना। And once the equilibrium achieved, right, you will have 0.6 moles of A are present over there. On once equilibrium has been achieved, for suppose equilibrium has been achieved हो गया आपके पास, equilibrium achieve होने के बाद आपके पास जो moles आपने देखे हैं A के वो कितने आए हैं 0.6. So you can say that 0.6 moles of A आपके पास क्या हुए हैं are also present over there at the end of equilibrium achieved, right? So what you need to do, you need to solve the rest of other things. You need to find out the moles of Q, you need to find out the mole, or you need to find out the moles of B, C, and D, and also you need to find out the value of Kc, right? Sorry for the words, मैं किसी और example को use करते हुए इस example को आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें वहां पर कुछ और लिखा हुआ है तो इसलिए मैं मुंह से वहां पर वही लफ्ज निकल रहा है. So just look at over here, we need to write this equation first. बच्चों A plus B, दो B हैं आपके पास and they are forming C and D, right? तो आपके पास उसने बता दिया है कि आपके पास इनिशियल मोल्स कितने हैं. अच्छा आप इसको आइस सपोज कर सकते हो, आइस. एंड व्हाट इज आइस? आइस का मतलब होता है इनिशियल मोल्स, ठीक है ना, इनिशियल मोल्स एंड देन चेंज इन मोल्स, राइट, एंड देन मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना. ये आपने सॉल्व करना होता है टेबल, ठीक है. इनिशियली यू हैव 1 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B, ठीक है ना, in the solution, and initially product आपके पास नहीं होगी तो it would be 0. जी बेटे. सर हमारे पास अगर 2p है तो वो 2 मोल्स नहीं होंगे? नहीं, वो तो इक्वेशन में ना, अभी हम लिख रहे हैं गिवन मोल्स, जो इनिशियल गिवन मोल्स है ना आपके पास, हम वो लिख रहे हैं, ठीक है. ठीक. अभी उन्होंने जो आपको गिवन किया है वो वहां लिखा हुआ है, देखो, you have 1 mole of A, this is given to you, 1 mole of A, ये इनिशियल मोल्स आपको गिवन है, ठीक है ना, and 1 mole of B, ये आपको गिवन है. So we are using this right now, इनिशियल मोल्स. और इनिशियली C और D आपके पास 0 होंगे क्योंकि आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट्स हैं. और उन्होंने आपको बताया कि once the equilibrium has been achieved, so you will have 0.6 moles of A remain, या प्रेजेंट है, अभी भी वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों. इसका मतलब you can see this, that how much moles of A used, 1 minus 0.6, it means 0.4 moles of A has been used, right बच्चों, or not? यस. अब देखें, आपने अब इस्तेमाल करना है वो जो इक्वेशन के अंदर नंबर लिखा हुआ है उसको अब आपने इस्तेमाल करना है. जस्ट लुक एट ओवर देयर. अगर आपके पास A का 1 मोल होता है तो B के 2 मोल से रिएक्ट करता है, ऐसी है कि नहीं है? ऐसी है बच्चों. जी. अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इसको यूज करते हुए बताना है कि भाई अगर A 0.4 यूज हुआ है तो इसका डबल B यूज हुआ होगा, सो इट शुड बी 0.8. और फिर अब आपने माइनस करके लिख देना, इक्विलिब्रियम पे बचेंगे ये 0.2 मोल्स. इज दैट राइट बच्चों, और नॉट? यस सर. इसी तरह अब चेंज के अंदर ही आप हमेशा रिलेशन इस्तेमाल करते हैं. जस्ट लुक एट ओवर हियर, इफ यू हैव 1 मोल ऑफ A, सो इट इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ C. इसका मतलब है कि अगर आपके पास 0.4 मोल्स A के खर्च हुए हैं,
so it would produce 0.4 moles of C and 0.4 moles of D. और क्योंकि ये products हैं तो हमें इसमें add करना होता है, so it would give you 0.4 moles of product on equilibrium. Right, बच्चों? Got this point? Yes sir. Yes. Then after that, you need to find out concentration as well. आप इसकी concentration भी निकाल सकते हो, इन सबकी concentration, और concentration क्या होती है बच्चों? Moles over volume in decimeter cube. So right now अभी हमारे पास जो है बच्चों इन सबकी ही volume जो है 1 decimeter cube है, तो whatever the moles right now we have, उतनी ही आपके पास concentration भी आ जाएगी, same concentration आ जाएगी. So if you want to find out the value of Kc, so you can easily find out the value of Kc, because we know that what is Kc? Kc is actually the concentration of products with raised to the power of their coefficients over the concentration of reactants with raised to the power of their coefficients, right? So we just need to put the values of their concentrations. It is 0.4 into 0.4 over 0.6 into 0.25 square, right, बच्चों? We just need to solve this. क्या आंसर आता है? Let's see. So here it is as 0.4 into 0.4 और नीचे है 0.6 into 0.2 का square. So it is giving us 6.667. It is giving us 6.667. And if you talk about the unit for this, so we can see this. हमारे पास नीचे 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि mole inverse decimeter cube. Is that right, every one of you? सर आप रिपीट कर सकते हैं ये 0.4 CD का कैसे है? CD का 0.4 इस तरह से आया, आप देख सकते हैं इक्वेशन आपको बता रही है when you have 1 mole of A, और A का जो रिलेशन है वो C और D के साथ सेम है. 1 mole of A अगर कंज्यूम होगा तो 1 mole of C बनेगा, 1 mole of A कंज्यूम होगा तो 1 mole of D बनेगा. So if you are consuming 0.4 moles of A, so definitely 0.4 moles of C would be produced. ठीक है, और उतना ही आपके पास D भी प्रोड्यूस होगा, C भी उतना ही प्रोड्यूस होगा और D भी उतना ही प्रोड्यूस होगा. Is that right? Yes सर ये डिवाइडेड बाय 1 का क्या मतलब है? डिवाइडेड बाय 1 का मतलब ये है कि यू हैव वॉल्यूम, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम आपके पास गिवन है, तो उससे हम कॉन्सेंट्रेशन निकालें. मोल्स ओवर वॉल्यूम क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है. कॉन्सेंट्रेशन निकालें. ठीक है जी. Any problem to any one of you? All clear? नो सर, क्लियर है. चलें, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, और वो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? वो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि for suppose we have 1 mole of hydrogen, right, and 1 mole of chlorine reacting together and reaching towards dynamic equilibrium, right? अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं और आपस में क्या हो जाते हैं? आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, और अचीव होने के बाद हमें पता चलता है कि भाई रिएक्शन कितना हुआ. ये आपके पास फॉर सपोज यू कैन से दैट आपको ये पता चलता है कि आपके पास ऑन इक्विलिब्रियम, once the equilibrium achieved, so you will have 33% हाइड्रोजन रिमेन. आपके पास 33% हाइड्रोजन बचती है इक्विलिब्रियम पर, ठीक है ना, यानी कि 67% यूज हो गए. चले अब इसको सॉल्व करते हैं. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन यू जस्ट नीड टू राइट हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन gives you HCl, right? We know that we have 2 moles of HCl in the equation, and we just need to write ice over here. ice का मतलब क्या होता है? आपके पास इनिशियल मोल्स, ठीक है ना, उसके बाद आपके पास चेंज इन मोल्स एंड देन मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, वो बात अलग है, ठीक है ना. कॉन्सेंट्रेशन चलें अभी 1 मिनट देख लेते हैं. फॉर सपोज आपके पास यहाँ पर अभी राइट नाउ वी हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना. इनिशियली प्रोडक्ट आपके पास 0 होती है. दे आर सेइंग कि आपके पास इक्विलिब्रियम पर जो हाइड्रोजन बच रही है वो बच रही है आपके पास 33%. 33% का मतलब ये होता है कि 0.33 आपके पास हाइड्रोजन बच गया है. तो बच्चों यूज कितना हुआ होगा? इट मस्ट बी 0.67 और नॉट. ऐसी है बच्चों.
अब देखें अगर Yes, sir. आपके पास हाइड्रोजन और आप क्लोरीन का इक्वेशन में रिलेशन देखें तो दे बोथ आर सेम. So if 0.67 moles of hydrogen is consuming, so definitely 0.6 moles of chlorine is also consuming. And if you minus 1 minus 0.67, so it would give you 0.33 moles of chlorine as well. And again, you just need to see the relation. अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिलेशन है वो है डबल. यानी कि if 1 mole of hydrogen gas is consuming, then you will have 2 moles of hydrochloric acid to form. Right? Same as it is if you have 0.67 moles of hydrogen consumed, so the double of this would be produced on the other hand. Right, बच्चों? So it should be 1.34 और यहाँ पर हम इसको ऐड करके लिखते हैं. Is that right or not? जी सर. कोई मसला? अब देखो यहाँ पर हमने वॉल्यूम गिवन नहीं है. ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमें वॉल्यूम गिवन नहीं है कंटेनर का कि भाई कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, तो उस हिसाब से हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकें. लेकिन अब हम क्या करें? अब देखो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास आसानी ये है कि अब ये जो इक्वेशन हमने अभी सॉल्व करी है, इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एंड आफ्टर आर रिमेन सेम. ठीक है ना. अगर फॉर सपोज मैं इसकी केसी की एक्सप्रेशन लिखता हूं तो केसी की एक्सप्रेशन क्या होती है? केसी की एक्सप्रेशन होती है concentration of hydrogen concentration of hydrochloric acid की power 2 and over the concentration of hydrogen and chlorine. ठीक है ना. ये आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए. But right now we don't have volume, we just have number of moles. So we can write like this: moles over volume का स्क्वायर, और नीचे भी हम लिख सकते हैं moles over volume into moles over volume. ये लिख सकते हैं ना बच्चों हम. And you can see this, नीचे वाले को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ moles over volume का स्क्वायर, और नीचे वाले को भी मैं इसी तरह लिख सकता हूँ moles over volume का स्क्वायर. ठीक है ना. तो यहाँ पर वॉल्यूम आपके पास दोनों तरफ कैसा है? दिस इज लाइक मोल का स्क्वायर और वॉल्यूम का स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके पास ऐसी है मोल का स्क्वायर ओवर वॉल्यूम का स्क्वायर. सो यू कैन इजीली कट डाउन द वॉल्यूम्स. आप वॉल्यूम्स काट सकते हैं, वॉल्यूम का काम ही नहीं है, बट क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स आर सेम. ठीक है ना. तो अगर आपको वॉल्यूम गिवन नहीं भी है तो आप मोल्स से भी काम चला सकते हैं ऐसी इक्वेशन में जहाँ नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ कैसे हो? सेम हो. आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ मोल्स ओवर देयर, it would give you the right answer. So moles of hydrochloric acid is 1.34 इसका square, and the moles of hydrogen is 0.33 on equilibrium, and the moles of chlorine is also 0.33 on the equilibrium. So let's see what should be the answer of this. तो ये हो जाएगा आपके पास 1.65 का स्क्वायर, ठीक है ना, ओवर 0.33. कितना आंसर आ रहा है? 1.65. 1.65 आ रहा है. Yes, sir. चलें, आप जो कह रहे हैं मैं वही आंसर यहाँ लिख रहा हूँ 1.65. and if you talk about units, so there would be no unit as units cancelled out each other. Right बच्चों? Is that right? इसी को Yes, कोई sir. मसला है? All clear? Yes. चले, हमारे पास यहाँ पर एक और इक्वेशन है. सर जी बेटे. सर ये 0.66 नहीं होगा? 0.66 जी 0.6 इनिशियल में. इनिशियल में 0.66 क्यों होगा? वो तो आपको दिया हुआ है ना ऊपर, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन टू यू. इनिशियल में क्यों होगा? ऑन इक्विलिब्रियम आपके पास 33% बचता है, तो मतलब ये है कि आपने सॉरी सर इन चेंज, क्योंकि जो आ रहा है आंसर वो 0.66 आ रहा है. अगर आप 1 में से 0.33 माइनस करेंगे तो 0.66 आंसर आ रहा है आपके पास. ठीक है, अगर पॉइंट के बाद इतना सा इशू आ रहा है तो चलेगा, कोई मसला नहीं. वैसे 0.67 आना चाहिए आपके पास. आप देख लें एक बार. जी सर भी सही है. सही है. जी अच्छा जी, ठीक है. अभी मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर, तो आई एम गिविंग यू दैट एग्जांपल टू सॉल्व. जल्दी से आप लोगों ने ये सॉल्व करना है. आई एम सेंडिंग यू ऑन योर व्हाट्सएप. आप चेक कर लें
ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं?